गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा मेकानो रिसेप्टर्स विषय जोटा कि आमर B.Sc 4th सेमिस्टर कोर पेपर 8 अच्छी जोटा कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स रो। तो आज क्लास रे तुम टोटाल कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स जहाँ भी अच्छी कोर पेपर टोटाली पूरा कंप्लीट हो गला परे आमे कोर पेपर 9 तो स्टार्ट करिचे एवं आसंता काली कोर पेपर 9 सहित कोर पेपर 10 मध्य आमे स्टार्ट करदेबा है। तो एका संगे दीटा को आमे पेपर डेली कवर करिबा। तो आशा रखुची तुमको वीडियो पसंद आसीबो, पसंद आसिले लाइक करिवो, शेयर करिवो, सब्सक्राइब करिवो एवं जो माने भी मो चैनल नुआ अच्छो मो सेमान को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी, से माने कि प्रीवियस क्लास गुडा को देखि पारो एवं यार पीडीएफ तुम टेलीग्राम रे पाई जिवो। तो टेलीग्राम लिंक मध्य मो डिस्क्रिप्शन में दे देछि। तो देखो बहुत जन को कम्प्लेन भी आसूची जे वर्टिब्रेट्र जो कंपैरिजन अच्छी तार टिके आमे बुझी पारनु, माने कन्फ्यूजन लगुच। तेणु आज मुझे तो गोटे ट्रिक बताऊँगी, से ट्रिक तुम मैंने भी जानी गोटे कम कर जो मुझे पढ़े से तो तुम फेयर नोट बनइब कहीं तो परीक्षा सेमती ही नोट पड़ो, किंतु कॉन्सेप्टा को बुझापी कौन पाई तुम गोटे कम कर गोटे टेबुल करदेव। प्रथम से फिश, देन आम्फिबिया, देन रेप्टाइल्स, देन बार्ड्स बा एप्स, देन मामाल एमती करके लिखिदेव। एवं मनकर एपटे जो जिनसटा तुम विषय जानवा मनकर डाइजेस्टिव सिस्टम विषय, तो फिश केमिति हुए, आम्फिबिया केमिति हुए, रेप्टाइल्स केमिति हुए, एप्स केमिति हुए, मामाल केमिति हुए एमती लिखिदेव। ठीक अच्छे। नेक्स्ट एटा को सरीगला। नेक्स्ट अच्छी तुम जो नर्भस सिस्टम फिश कौन अच्छी, मामा एम्फिबियान कौन अच्छी, रेप्टाइल कौन अच्छी, यहाँ को जानीदेव है। तो मनकर यहीटा को जब तुम पूरा पूरी पढ़ीदेल है, पॉइंट गुड़ाक मन रखीदेव, ताहले कौन कर तुम मन रखीदे परीक्षा एटलिस्ट ताकू तुम डेस्क्राइब करके अंडरलाइन करके लिखिपर। ताले जी एग्जामिनर अच्छी से तुम खाता देखिले तुम से जो पॉइंट तुम जो अंडरलाइन कर तो से जान जे तुम से विषय जानीच है। तो यहाँ हूँ कंपैरेटिव एनाटॉमी विषय माने कंपैरेटिव एनाटॉमी को यही प्रकार कभर न कले असुविधा हम कहीं यहाँ बहुत कन्फ्यूजन आ बहुत माने ये वाला जिनसटा। ठीक अच्छे। माने बहुत कन्फ्यूजन भी तैयारी करे आ चैप्टरटा पर्सनाली जब मत बहुत बोरिंग चैप्टर लगे एटा। ठीक अच्छे। कहीं एटार कौन अच्छी तार कौन अच्छी सब तक कंपेयर कर एकाथर आम जब बही रे गप परी पढ़ा ताले कन्फ्यूजन होता है। ठीक अच्छे। तो तुमको मो ट्रिकटा हुए तो पसंद आसी पारे। आउ जो तुम अन्य किसी ट्रिक जानिच किंबा जार जब कौन प्रकार डाउट बाहर दयाकर मते ये कमेंट बॉक्स रे जनाओ, ताहले मु जानले तुमको सही डाउटा को मु तुमको चेष्टा करबी क्लियर करबा पई। ठीक अच्छे। तो देखो आशा रखुची तुमको वीडियो पसंद आसीबो। देखो मेकानो रिसेप्टर कौन, मेकानो रिसेप्टर बाय डेफिनेशन रेस्पॉन्ड टू मेकानिकल डिस्प्लेसमेंट। तो आम ना रू ही जानूँ जे एटा मेकानिकल मेकानिकल सहित तार रिलेशन अच्छी, तेणु ताको आम मेकानो रिसेप्टर बोली कहू। पुशिंग द स्किन on the back of one hand with the finger of the other hand for instance displays a great number of cutaneous mechanoreceptor। ता माने कौन तुम टे बुझी पार ता माने मन कर आम गोटे आंगुली को आम आउ गोटे आंगुली एमती दबेबा, दबेले जो स्किन जो बा जो आमर जो एपिडर्मिस अच्छी तार जो डिस्प्लेसमेंट होता है ताको आम गोटे मेकानो रिसेप्टर आम एग्जांपल दे पारबा। सिमिलरली जदि आम देखा जॉइंट रिसेप्टर रेस्पॉन्स टू मेकानिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ लिम्फ, जितेबाला आम आम गोड़र मूवमेंट करिथाओ सेतेबेले जो जॉइंट आमर सी जो 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 को प्रकार जॉइंट गुड़ाक अच्छी जोटा कि आम आंठुरे थिबा जॉइंट हो बा पादरे थिबा जॉइंट हो एगुड़ाक सब तुम कौन होता है रिसेप्टर होता है, तार कोऑर्डिनेशन होता है। तो कोऑर्डिनेशन केमती होता है, ये रिसेप्टर रेस्पॉन्स द्वारा ही कोऑर्डिनेशन होता है, ताकू मध्य आम मेकानो रिसेप्टर बोली कहि परिबा। तो व्हाइल द बॉडी has many individual example for mechanoreceptor, they can be conventionally grouped into three broad category। कौन गोटे अच्छी पोजिशन एंड वेलोसिटी मेकानोरिसेप्टर रेस्पॉन्स बाय फायरिंग इम्पल्स है। तो बेसिकली देखो पोजिशन एंड वेलोसिटी मेकानोरिसेप्टर काम कौन फायरिंग रेस्पॉन्स। तो फायरिंग इम्पल्स माने कौन जेतेबेले कौन सी आमको गोटे ऑर्डर आसे
ହେଲା ଇମ୍ପଲ୍ସରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ କେମିତି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପଲ୍ସରେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଥାଏ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ହେଇଥାଏ ହେଲା ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ଟା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଫାୟାରିଂ ବୋଲି କହୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମନେକର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟା କେମିତି ଆସିବ ଏଇ ଫାୟାରିଂ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ ହେଲା ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ସୋର୍ସ is stationary as well as when it is moving. Velocity mechanoreceptor on the other hand fire only when the stimulating source is moving hela and stop or become silent hela once the mechanoreceptor has been displaced to the new position fixed position ହେଲା new fixed position ତା ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିକ୍ସ ପୋଜିସନକୁ ମେକାନୋରିସେପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଏଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏ ବା ଫାୟାର କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ଦ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମେକାନୋରିସେପ୍ଟର କ'ଣ ସେଟା ଫାୟାର ଓନ୍ଲି ଏଟ୍ ଦ ଅନସେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଫାୟାର କରେ ହେଲା ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ କରିବ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଲା ବେଳକୁ ଫାୟାର କରୁଥିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଫାୟାର କରିବ ହେଲା ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାର ମେକାନୋରିସେପ୍ଟରକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ହ୍ୱାଇଲ୍ ସମ୍ ମେକାନୋରିସେପ୍ଟର ଫଲ୍ in only one of the three group it is important to recognize that other shows characteristic of two or even all three of the group there appears to be no receptor which responds strictly to position nevertheless it is likely that all position receptors show some degree of the velocity response तो এটা एमती किसी इम्पोर्टेंस नहीं देखो नेक्स्ट देखिए हमें देखो when a mechanoreceptor is stimulated ହେଲା it firing rate increase मन रखी तो एटा इम्पोर्टेंट पॉइंट जेतेबेले मेकानोरिसेप्टर तुम जेतेबेले स्टिमुलेट करे केतेबेले स्टिमुलेट करे जेतेबेले फायरिंग रेट इंक्रीज होबो हैला सेतेबेले से स्टिमुलेट करिवो as the degree of the displacement increase so does the firing rate हैला at the certain level of displacement the firing rate stop हैला stops increase even in the face of the continual displacement the firing rate at the greatest displacement minus the firing rate of the least displacement represent the dynamic range of the receptor ता माने कोन तुमको जदी पचारबे range of displacement कोन range of displacement हैला range of displacement तो range of displacement होचे हमर कोन firing rate हैला firing rate of हैला केतेबेले ग्रेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट जेतेबेले हबो ग्रेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट हैला मोटी लिखि दोछि शॉर्ट फॉर्म जीडी ग्रेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट माइनस कौन हम फायरिंग रेट ऑफ द लीस्ट डिस्प्लेसमेंट है तो ग्रेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट रु लीस्ट डिस्प्लेसमेंट को आम जब फायरिंग रेट को माइनस करदे ताले रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आमर बाहरी जीवो है तापर देखो यहाँ मन रख मेकानोरिसेप्टर्स इन हेयरी skin तो देखो all three type of mechanoreceptor are found in the hairy skin while these three types of also found in the glabrous मान hairless skin जोटी hair न थाए हैला ताको glabrous बोली कहा जाए there are significant differences between the individual receptor तब देखो position and velocity receptor कौन ताको टिके हमें clearly पढ़िबा two types of position and velocity receptor are found in the hairy skin type 1 receptor are the peripheral end and type 1 beta हैला receptor by type 1 beta fiber associated with the Merkel's disc हैला एटा मन तो Merkel disc तो से associated करि थाए they are stimulated by the indentation of the skin and response with the irregular discharge है तब देखो they show a good velocity response है good velocity response but the smaller position कौन respondent है respond type 2 receptor कौन type 2 receptor होची are the peripheral end of type A beta है fiber which terminate in the ruffini corpuscle एटा मन रखितो ruffini corpuscle terminate होता है they are stimulated by the deformation of the skin and response with the
रेगुलर डिस्चार्ज है। तो देखो बोथ टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर आर स्लोली अडाप्टिंग and are thus able to give rise a conscious sensation associated with both instantaneous and the prolonged skin displacement। तापर देखो वेलोसिटी रिसेप्टर कौन जानिबा। तो वेलोसिटी रिसेप्टर होची देखो 4 टाइप ऑफ वेलोसिटी रिसेप्टर आर फाउंड हैला। जो देखो जे कोटी देखा जाए हेयर स्किन रे G2 हेयर रिसेप्टर आर द पेरिफेरल एंड ऑफ टाइप A बीटा fiber terminating around the base of the guard hair in the base of the hair follicle है। they respond to both slow and rapid movement से माने कौन both slow भी दिखाते और rapid movement भी होती hair and deflection of the skin। field receptor are associated with type A beta fiber and their terminal morphology is unknown है। तब देखो D हेयर जो आम देखा D हेयर रिसेप्टर आर द टर्मिनाल एंडिंग ऑफ टाइप A डेल्टा है ये मन रखिए डेल्टा है फाइबर टर्मिनेटिंग अराउंड द बेस ऑफ द बोथ गार्ड एंड डाउन जो अच्छे फाइन हेयर पाखे देखा जाए है। दे रेस्पॉन्स टू बोथ स्लो एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ दीज हेयर एज वेल एज स्किन डिफ्लेक्शन। अच्छा C मेकानोरिसेप्टर आर द रेयर typically being associated with the non-myelinated type C fiber है। The terminal morphology is unknown and they respond only to the slow displacement of the skin है। तो केते प्रकार टाइप रो देखा गला और तार को जगह तार पोजीशन एवं से मानकर कोन काम कोन देखिबो है। तब देखो ट्रांसिएंट रिसेप्टर कोन two type of transient receptor are found in hair skin। Pacinian corpuscle receptor are associated with the peripheral end of the certain type A alpha and beta fiber है। they respond कौन करे to the mechanical taps and vibration in the 50 to 500 Hz range है। सेमती G1 hair receptor are specialized process at the base of the hair follicle associated with the large type A alpha fiber and they respond to the high velocity guard hair and skin displacement है। तापर देखो मेकानोरिसेप्टर इन ग्लैब्रस हेयरलेस स्किन रे को प्रकार देखा जाए देखो लाइक हेयरी स्किन जदि हेयरी स्किन देखा ग्लैब्रस स्किन बा हेयरलेस स्किन कौन होची also contain positive and velocity है velocity and transient receptor। तो तापर देखो nevertheless there are some morphological differences between them such as type of afferent nerve कोथरे डिफरेंस देखा जाए किछि डिफरेंस है। तो तबर टोटल लाइक तबर हेयरी स्किन टाइप रो तो किछिटा डिफरेंसेस देखा जाए केमती afferent nerve fiber which carry the signal and the nature of the receptive element itself है। तो यार देखिबा हेयरलेस स्किन रो हमें देखिबा पोजीशन एंड वेलोसिटी रिसेप्टर कोन। तो देखो position and velocity receptor in the glabrous skin are classified as slowly adapting SA receptor है slowly adapt करता है। It is likely that there is no more than one type of present। Nevertheless SA receptor माने कौन slowly adapting है are associated with the type A beta है fiber and terminate कोटी terminate होता है ruffini type corpuscle and possibly Merkel disc है। they response कहाँ को response करे देखो ये sorry indentation of the skin। तापर velocity receptor कौन velocity receptor कौन हो जे आर क्लासिफाई इन द रैपिडली अडाप्टिव RA रिसेप्टर आर एसोसिएटेड कौन जोड़ा जी टाइप A alpha fiber and possibly terminated the Meissner corpuscle। तब टाइप लाइक SA receptor they respond to skin indentation है। तापर जो देखबा ट्रांसिएंट रिसेप्टर देखबा तारो तो देखो ट्रांसिएंट रिसेप्टर ऑफ हेयरलेस स्किन जोटा ग्लैब्रियन स्किन आर ऑल्सो पासिनियन कॉर्पसल दे हैव द सेम मॉर्फोलॉजिकल एंड स्टिमुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक एज दोज ऑफ ग्लैब्रस स्किन है। तापर देखो मेकानो रिसेप्टर इन मसल्स एंड टेंडन। तो मसल्स और टेंडन रे को प्रकार होता है देखो
strict velocity receptor do not appear to be present in this group. However, transient receptor are several kind of positive and velocity receptor have been identified है तो positive and velocity receptor कौन देखा आम है कौटी मसल्स एंड टेंडन रे तो देख द पोजिशन एंड द वेलोसिटी रिसेप्टर इन द ग्रुप include the muscle spindle, Golgi tendon organ and the pressure कौन receptor. Muscle spindle are associated with both जोड़ा होचे आमो IA and group 2 nerve fiber and response both to change and rate of the change in the muscle length है तापर Golgi tendon organ are terminal ending of the group IB fiber है and their response कहाँ को response करे tendon developed in the fascia and the contracting of the stretch of कौन muscles in so far as it applied tendon to the कौन टेंशन टू द टेंडन है जो टेंडन को से जब कौन से प्रकार प्रेशर देला ताहले अप्लाई करे तापर प्रेशर रिसेप्टर कौन रेस्पॉन्स टू द प्रेशर ऑन द बेली of the muscle primarily and the any distortion of the fascia surrounding the muscles they are associated with the certain group जोड़ा होचे हमें थर्ड फाइबर and their terminal morphology is unknown सेटा हमें जानिनु हैला तो कोटी टर्मिनाल होता है कोटी तार ओरिजिन आ तार काम कौन एटा को जानिबार अछि तुमति देखो ट्रांसिएंट रिसेप्टर कौन ट्रांसिएंट रिसेप्टर्स होची ट्रांसिएंट रिसेप्टर अगेन द पासिनियन कॉर्पसल टाइप तो तीनटा जे आमे देखु तीनटा रे पासिनियन कॉर्पसल टाइप रो ही आमे देखु ट्रांसिएंट रिसेप्टर हैला दे आर एसोसिएट विथ कौन ग्रुप 2 फाइबर एंड रेस्पॉन्ड टू बोथ टैप्स एंड वाइब्रेशन इन द कौन 50 to 500 हाजर्ड रेंज है तो देखो जॉइंट रे को प्रकार मेकानो रिसेप्टर होता है all three type of mechanoreceptor are represent in the joints है जोड़ा होचे हम positive and velocity receptor आउटे transient receptor सबु तक तमरो जो joint रे मध्य applicable है however the distribution is not uniform किंतु ताकर distribution टा uniform नुहे तो फास्ट आम देखा पोजिशन एंड वेलोसिटी रिसेप्टर कार जॉइंट रो तो पोजिशन एंड वेलोसिटी रिसेप्टर आर द मोस्ट अबुडेंट टाइप ऑफ मेकानोरिसेप्टर फाउंड इन द जॉइंट दे फॉल इनटू टू कैटेगरी एसे टाइप 1 रिसेप्टर जोड़ा होचे एसोसिएट का तो माइलिनेटेड फाइबर एंड ग्रेटर देन कौन 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर which terminate with कोठी टर्मिनेट होता है गोल्गी टाइप ऑर्गन रे टर्मिनेट होता है हला जो जगह अंडरलाइन करी जो गुडा को कहूची मु सेटा बहुत इंपोर्टेंट ताको जो तुम आगो मन रखी देबो ताको तुम डिस्क्राइब करि परिबो अच्छा दे आर लोकेटेड इन द जॉइंट लिगामेंट कोठी देखा दे जॉइंट लिगामेंट रे एंड रेस्पोंड कोन करे बोथ जॉइंट पोजीशन एंड मूवमेंट को से रेस्पोंड करे हला तापर देखो ऐसे टाइप 2 जदी देखिबा हमें रिसेप्टर टर्मिनेट कोडी रूफिनी टाइप एंडिंग एंड एसोसिएट विथ टाइप ए बीटा फाइबर सहित से एसोसिएट होता है अच्छा ये रेस्पोंड करे कहा को टू द जॉइंट बेंडिंग एंड डिस्चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ द मूवमेंट है जिते मूवमेंट हुए नहीं बेंडिंग हुए कि बेंडिंग समय रे ये तार काम करे टू गिव पोजिशन सेंस एंड ड्यूरिंग मूवमेंट इट गिव्स वेलोसिटी सेंस है तो जितेबाला यार जो बेंडिंग हुए जो मूवमेंट हुए ना से पोजिशन तार काम करे आ किंतु जो से तार मूवमेंट करे से समय वेलोसिटी सेंस रे काम करे है सेकेंडटा देखा वेलोसिटी रिसेप्टर तो देखो वेलोसिटी रिसेप्टर सिग्नल फाजिक स्टिमुली है देर टर्मिनाल मॉर्फोलॉजी इज अननोन एटा हमें जानिनु बट दे आर एसोसिएटेड विथ द टाइप ए अल्फा फाइबर एंड रेस्पॉन्स टू कौन जॉइंट मूवमेंट से रेस्पॉन्स करे पर्टिकुलरली ए बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग नेचर जदि आम बेंड होचु बा आम बॉडी रे जदि ट्विस्ट आसला ताहले ये काम करे सेमती ट्रांसिएंट रिसेप्टर कौन These group represent the least common joint receptor है responding to the mechanical transient to the in the कौन joint movement. Their signal tap stimuli and associate with the type A alpha fiber है which terminate in जोटा पासिनियन टाइप corpuscle है
तब देखो दे डिस्चार्ज व्हेनेवर द जॉइंट इज मूव्ड रिगार्डलेस एंड डायरेक्शन एंड द रेस्पॉन्स इज ब्रीफ है। तापर देखिबा हमें मेकानो रिसेप्टर इन द स्पेशल सेंस ऑर्गन ने को प्रकार देखा जाए हम देखिबा। तो आम एपर्यंत कौन जानले तो स्किन सहित एसोसिएटेड तापर जॉइंट सहित आ मसल सहित आबे एसोसिएटेड जानले। बर्तमान आबे देखिबा तार सेंस ऑर्गन सहित को प्रकार तार एसोसिएशन अछि। द ईयर एंड द वेस्टिबुलर सिस्टम मेक इंटरेस्टिंग यूज ऑफ मेकानोरिसेप्टर कौन ऑर्गन ऑफ कोटी हेयर सेल रेस्पॉन्स टू साउंड इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द इनर ईयर है। स्पेशल सोमाटिक अफेरेंट है फाइबर cranial nerve 8 are stimulated when the hair are bent है। vestibular system hair cell located in the कौन crysta ampullaris and the masula acoustica of the कौन vestibular apparatus response to क्या response करे angular movement है linear acceleration and the position of the head in the space है। तब देखो एसएसए कौन स्पेशल सोमाटिक अफेरेंट है फाइबर ऑफ cranial nerve 8 located at the base of the hair cell कोठी देखा जाए हेयर सेल बेस देखा जाए और से रेस्पोंड करे कहा को when the hair are bent push or pull है। तब मेकानो रिसेप्टर इन आमे देखिबा viscera है। ए नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑपरेट इन द visceral organ and the blood vessel जोड़ा जे कैरोटिड साइनस एओर्टिक जोड़ा जे बारो रिसेप्टर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द कैरोटिड साइनस एंड द एओर्टा रेस्पेक्टिवली है। तो कोटी कोटी देखा जाए कैरोटिड साइनस ता कोटी देखा जाए कैरोटिक साइनस रे आउ तब रहा एओर्टिक बारो रिसेप्टर है एओर्टा रे है। तो देखो रेस्पॉन्स टू द चेंज इन द ब्लड प्रेशर है। तो देयर टर्मिनल मॉर्फोलॉजी इज अननोन यार मध्य अननोन टर्मिनल मॉर्फोलॉजी को प्रकार अच्छे अननोन अच्छे है। तब देखो बट जनरल visceral afferent GVA फाइबर एंड cranial nerve 9 है जोड़ा जी ग्लासो फारेंजियल बोली कहबा आउ 10 जोड़ा जी भागस रेस्पेक्टिवली है कनेक्टेड द रिसेप्टिव एलिमेंट व्हिच होची ब्रेन स्टेम है। एल्वियोलर स्ट्रेस रिसेप्टर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द पल्मोनरी एल्वियोली जोटा लंग्स रही आर द पेरिफेराल एंडिंग ऑफ द GVA फाइबर of the vagus nerve है। तो तांकर कौन दे रेस्पॉन्स टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ द लंग है जेहेतु लंग्स रही इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ द लंग एंड द टर्मिनल मॉर्फोलॉजी यार मध्य अननोन। सेमती गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जदि देखा है स्ट्रेस रेस्पॉन्स रिसेप्टर आर लोकेटेड कोडी थ्रू आउट द वॉल ऑफ द कौन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब रे देखा जाए टोटाल ट्यूब रे तार वाल जो ट्यूब रो जो वाल अच्छी सेठी टोटाली देखा जाए रिसेप्टर है कोड़ा फ्रॉम द फारिंग्स टू रेक्टम है फारिंग्स टू इसोफाइगस तापर तुम स्टोमाक तापर आसला स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तापर रेक्टम। तो ये टोटाल जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अच्छी सेठी तार बॉडी तार वाल ले थ्रू आउट तार जीआई ट्यूब रे देखा जाए है। दे रेस्पॉन्स टू द स्ट्रेस of the tube and subsequently conduct impulse to the CNS to GVA fiber of cranial nerve 5 है जो ट्राइगेमिना क्रेमिनाल बोली कहू। अच्छा 5 रे देखा जाए ता सहित 9 रे और 10 रे मध्य देखा जाए आज वेल आज सर्टेन अफेरेंट फाइबर मध्य देखा जाए से अफेरेंट फाइबर कोठी थाए पेल्विक नर्व रे थाए है। तब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेस रिसेप्टर आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द detrusor muscles of the bladder है। their terminal receptive element are associated with the GVA fiber of the pelvic nerve and their response to the filling of the bladder है। तो यहाँ तो टोटाल आम मेकानो रिसेप्टर विषय पढ़ले केमती अच्छी कौ जगार जॉइंट रे केमती मसल्स केमती आम जानले। बर्तमान ताको आम एबे
टिके कंपेयर करिके देखिबा हैला। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ मेकानोरिसेप्टर इन वर्टिब्रेट्स। तो कंपेयर करबा केमती कंपेयर करबा। तो देखो मेकानोरिसेप्टर इज द सेंसरी रिसेप्टर दैट रेस्पोंड टू द मैकेनिकल प्रेशर और आम जान मैकेनिकल प्रेशर थिले ताको मेकानोरिसेप्टर कहबा। तो देयर आर 4 मेन टाइप जो ऑफ द ग्लैब्रस स्किन ऑफ द ह्यूमन। गोटे पासिनियन कॉर्पसल, मेसनर्स कॉर्पसल, मार्केल डिस्क और रूफिनी कॉर्पसल। तो 4 प्रकार जोटा कि हमें प्रीवियसली देखिले भी। देयर आर ऑल्सो मेकानोरिसेप्टर इन द हेयर स्किन एंड हेयर सेल इन द कौन कोचलिया which is more sensitive mechanoreceptor in transducing air pressure wave into the nerve signal sent to the brain हैला। तो प्रथम देखिबा माइक्रोविली कौन। तो देखो microvilli are the microscopic cellular membrane protrusion that increase the surface area of the cell and are involved in the wide variety of function including absorption, secretion, cellular adhesion, mechanotransduction। तो ये गुड़ा होची तार काम हैला। तो तापर देखो thousand of the microvilli form the structure is called brush border that is found in the apical surface of some epithelial cell ले देखा जाए हैला। such as the small intestinal enterocyte and the kidney proximal tubule of the vertebrate। तो को जगह देखा जाए जान लो। तापर देखो जोड़ा होची एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ कौन। एंडोलिम्फ इज द फ्लूइड कंटेन इन द मेम्ब्रेनस जोटा लेबिरिंथ ऑफ द इनर कौन ईयर इन द मामाल। तो मामाल जो इनर ईयर अच्छी से जगह देखा जाए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जो कौन स्कार्पा फ्लूइड आफ्टर एंटोनियो स्कार्पा हैला। द मेन तार मेन जो मेन कैटन ऑफ दिस यूनिक इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज कौन पोटासियम which is secreted from the stria vascularis हैला। तापर देखबा पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ कौन। पेरिलिम्फ इज an extracellular fluid located within the कोचलिया। कोचलिया कोटी जो पार्ट ऑफ ईयर इन द 2 of the 3 compartment जो स्काला टिम्पानी एंड स्काला भेस्टिबुली हैला। द आयोनिक कंपोजिशन ऑफ द पेरिलिम्फ इज कौन comparable to the plasma and the cerebrospinal fluid हैला। द मेजर जोड़ा होची कैटन इज पेरिलिम्फ इज द सोडियम हैला। तार बेसिकली से सोडियम जेमती प्रीवियसटा थिला पोटासियम ये सोडियम तार दरकार हैला। तार वेस्टिबुलर सिस्टम कौन। द वेस्टिबुलर सिस्टम व्हिच contributes to the balance of the sense of the spatial orientation in the sensory system that provide the dominant input about movement and equilibrium जोड़ा इक्विलिब्रियो सेप्शन। तब ऑडिटरी सिस्टम देखिए। तो ऑडिटरी सिस्टम होची कौन। द ऑडिटरी सिस्टम ऑफ द सेंस सिस्टम सेंसरी सिस्टम ऑफ द सेंस इज हियरिंग कौन। क्लोचिलिया इन द ऑडिटरी पोजिशन ऑफ द इनर ईयर। तो क्लोचिया थाए। इट्स कोर कंपोनेंट is the organ of the corti, the sense organ of the hearing, which is distributed along the partition separating fluid chamber in the coil tapered tube of the cochlea। तब देखो crystae। तो crystae are the internal compartment जो formed by the inner membrane of the mitochondrion हैला। they are कौन stopped in the protein including ATP synthesis and the variety of the cytochromes, the maximum surface of the chemical reaction to occur in within the mitochondria। तो देखो organ of corti। The organ of corti is the organ in the inner ear
found only in the mammal पाखे देखा जाए that contain auditory sensory cell or hair cell है the cochlea detected in dedicated to the hearing covering the sound pressure pattern of the outer ear into electrochemical impulse which are passed on to the brain via the auditory nerve है some mammals emit sound and they determine the time it take for the sound to return है using the method of the sonar है sonar जानिଛ to locate themselves and they other objects is in a totally dark environment by the characteristic of the कौन केटे जोटा आम जाचु बार्ड्सर तो गोटे क्यारेक्टरिस्टिक सेटा है अंधकार से साउंड द्वारा से जानीपे तार से तार ये अच्छी है तो देख द वेस्टिबुलर सिस्टम डेडिकेटेड टू द बैलेंस है सॉरी तापर देखा मिडिल इयर कौन ता विषय जाना तो मिडिल इयर तो इनर इयर सरला एबे मिडिल इयर देखा द मिडिल इयर इज द पोजिशन ऑफ द इयर इंटरनल टू द कौन इयर ड्रम एंड एक्सटर्नल टू द ओवल विंडो ऑफ द कोचिया द मामालियन मिडिल इयर कंटेन 3 ओसिकल है which couple vibration of the eardrum into the wave in the fluid of the membrane of the inner ear the hollow space of the middle ear has also been called the tympanic cavity कहा जाए जोटा फंपा जगटा और cavum tympani जोटा देख कंगारू रेट है आर यूनिक इन हैविंग द enlarged tympanic membrane से मान को बहुत बड़ इयर ड्रम थाए है तापर से आम जो देखा नेक्स्ट अच्छा ये देख these अच्छा यहाँ देखो these and other specialization result in the increase the sensitivity to the sound है स्पेशली द लो फ्रिक्वेंसी साउंड को से माने जानी पारंती से देखो पिना कौन पिना होची आमर जो एक्सटर्नल इयरटा थाए है द इन एनिमल एनाटॉमी द पिना इज द विजिबल पार्ट ऑफ द इयर है जोटा आम खाली आखिरी देखी पारू दैट रिसाइड आउटसाइड ऑफ द हेड the function of the pinna is to collect sound and perform spectral transformation to the incoming sound which enable the process of the vertical localization to the takes place है तब स्टेप्स कौन स्टेप्स होची स्टेप्स होची is attached to the incus laterally and are कौन fenestra ovalis and the oval window medially है the oval window is adjacent to the vestibule of the inner ear the stapes is the smallest and lightest bone in the human body एटा बहुत important सबुठु छोटो हाड़ कोटा कह स्टापेस आम जाचु बेसिकली आटा हूँ लाइटेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी से देख टिम्पानन कौन तो टिम्पानन हूँ इज द एक्सटर्नल हियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सच एज फ्रॉग टोड एंड मामल एमान पाखे देखा जाए टिम्पानन इन द फ्रॉग एंड टोड इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द आई इट डज नॉट एक्चुअली पोजेस साउंड वेव इट सिंपली ट्रांसमिट देम to the जो amphibian inner ear है which protect the water and the कौन foreign object सेमती basilar membrane देख the basilar membrane within the cochlea of the inner ear is the stiff structural element of the separate two liquid filled tube है that run along with the कौन जो coil of the cochlea and scala media and the scala tympani तापर देखिबा quadrate bone तो देखो quadrate bone is the part of the skull in the most of tetrapod मान का देखा जाए जो amphibian sauropsid जो reptile हो कि birds हो and early synapsid है
In these animals is connected to the quadratozogal and the squamosal in the skull that form the part of the low joint है jaw joint है jaw joint बा आम जो jaw था से jaw रो joint रे देखा जाए तापर सेमती यदि आम देखिबा eel shark bears किंबा many birds appear to negative along the magnetic field line of the earth है even some bacteria use such force to orient themselves है तापर देखो birds kept in blind cage with no visual cues to the guide them है will peck and attempt the move in the direct in which they would normally migrate at the appropriate time of the year. सेमती एलास्मोबास देखा एलास्मोबास को गुड़ाक था एग्जांपल होची शार्क रेस कैट द इलेक्ट्रो रिसेप्टर कॉल्ड द आम्पुला ऑफ द लारेंजिनी एटा मन रखि आम्पुला ऑफ द लारेंजिनी इलेक्ट्रो रिसेप्टर है द रिसेप्टर सेल आर लोकेटेड इन द सेक दैट ओपन थ्रो जेली फिल्ड कैनाल टू पोर ऑफ द बॉडी सरफेस है तो जेली इज द वेरी गुड कंडक्टर so that negative charge in the opening of the canal can depolarize the receptor at the base causing the release of the neurotransmitter and increase the activity of the sensory neurons तो many aquatic vertebrates जो देखिबा can locate prey से माने प्रे को कैप्चर करि पारंती या द्वारा है एंड आर्संटेड कंटोर of their environment by means of the electroreceptor तो electroreceptor द्वारा समाने ताकर प्रे को कैप्चर करि पारंती बा जानि पारंती प्राइमेट मान को क्षेत्र देखिबा इंक्लूडिंग ह्यूमन आल्सो मोस्ट predator have two eyes है on one located on each side of the face है when both eyes are trained on the same object जदि सेम ऑब्जेक्ट को समान देखिले द इमेज दैट इज सीज इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज इज आइज व्यूज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट एंगल ता माने कोन जदि ह्यूमन माने आमे जतबेले गोटे आखिरे गोटे ऑब्जेक्ट को देखले जेमती दिसे आ गोटे आखिरे देखले टिके अलग स्लाइटली टिके अलग दिसे तमे केबे मार्क करिथिबो हैला तो काहे कि ना दी जन को पोजीशन जेहेतु अलगा रे थाए बा अलगा एंगल रे देखंती हैला this slight displacement of the image है permit कौन binocular vision the ability to कौन perceive 3-dimensional image है ए गोटे कारण पाई आमे माने 3-dimensional image को मध्य देखि पारू and the sense depth है having their eyes facing forward maximum of the field of the overlap in which their stereoscopic vision occurs है तो को प्रकार विजन देखि पारो स्टेरियोस्कोपिक विजन तो या सहित तुम टोटाल रिसेप्टर रो सरला परे आम टोटाल कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेटा कवर हो गला तो नेक्स्ट क्लास रे आमर खाली आ दुईटा रहिला जोटा होची कोर पेपर 9 आ कोर पेपर 8 जोटा कि आम कोर पेपर 9 तो ऑलरेडी आम आरंभ कर देलुनी काल टू कोर पेपर 10 मध्ये आम आरंभ कर दबा हैला तो सरी जीवो आशा करूँ तुमको वीडियो पसंद आथिबो थैंक यू।